हेलो। 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 हाय, कैसी है? ठीक नहीं लग रहा प्रियो। क्यों, क्या हो गया? फील शैटर्ड। क्या हो गया? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छा नहीं गया। मेहनत की थी इस बार मगर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एटलीस्ट तूने मेहनत तो की। मेहनत तो कभी खाली नहीं जाती ना। यू हैव एक्सपीरियंस, वो तेरे नेक्स्ट एग्जाम में काम आएगा। सो तेरा टाइम भी बचेगा और तेरी मेहनत भी। समझ रही हूँ मगर प्रेशर बहुत था ना। है घर की रिलेटिव्स के बहुत प्रेशर था। आई डोंट फील गुड एट ऑल। बट आई थिंक अगर तू ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगी, जितना तू अभी कर पाएगी टाइम यूटिलाइज, उतना भी तुझसे नहीं हो पाएगा। इट्स बेटर, जो हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं था, पर जो है एटलीस्ट वो हमारे हाथ में है। सो यू कैन ट्राई एंड नॉट बी ओवर प्रेशराइज्ड। और सबके एक्सपेक्टेशंस की बात है तो वो हमेशा ही रहेंगे, उससे कभी तुझे छुटकारा मिलेगा नहीं। एंड इफ you start carrying the burden of expectations, then it will only weigh you down. If you think you are happy and if you would pursue whatever you want to do with a light head and without any expectation for the result, then I think तू और भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तू इतना प्रेशर But मत I ले। feel exhausted. I feel exhausted Obviously, of course you'll feel और नहीं exhausted. तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, हैव सम ब्रेक। थोड़ा सा टाइम ले, रिजुविनेट योर सेल्फ, एंड आफ्टर व्हेन यू फील गुड, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू योर जर्नी। और कोई चीज़ जो तुझे बॉदर कर रही हो? यही था ना। फैमिली प्रॉब्लम्स तो तुझे पता ही है ना। बट अभी भी वक्त गया नहीं है ना। अनलेस लाइक यू हैव टाइम नाउ, यू हैव योर लाइफ नाउ। अभी भी तू कर सकती है, कुछ बिगड़ा थोड़ी है। एक अपॉर्चुनिटी गई है, मे बी सम बिगर अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू, राइट? यस, इस बार बिना किसी बर्डन के तैयारी कर, विद अ फ्रेश माइंड। And in fact, you are having the plus point that you have already studied and covered some part of yours already, or you will get more time for your revision or preparation. At least you now know कि तूने कहाँ गलती करी है. You have attempted once and you know all the flaws. So next time जब भी तू attempt करेगी, you have learned something, right? Yes, there is nothing to lose. You have only gained some experience. तो अब हंस दे और बिल्कुल भी चिंता मत कर, बिकॉज सब अच्छा होगा। ठीक है, let's try once more. Yes, we will try once more and now this time we will succeed. Yes. 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 Sure. That's the spirit. हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, mentally and physically, both ways. And yeah, welcome you guys to this wonderful family, and to those who have joined this channel recently, a very warm welcome to you guys, and I'm so grateful. मैं आपको बता नहीं सकती that I feel so glad that people are subscribing more to this channel, and our family is growing, and I'm so happy, you guys. Let's pull it off together, and I hope हमारी जर्नी बहुत अच्छी होगी. You know what? I want to share an interesting fact with you guys that जब एक महिला के गर्भ में बच्चा होता है and the woman is pregnant, then at that time the child can actually feel emotions and the child can feel energy. जो सेंसरी स्टिमुलाई होती है बच्चे की, वो डेवलप होती है उस टाइम पे, एंड he or she can feel anything. He's like joy, pain, sadness, and obviously through his or her mother, and he or she can taste things. बोलने का मतलब ये है कि पैदा होने के पहले ही हम फील करना चालू कर देते हैं। एंड जब हम पेट में होते हैं तो ना हमारे पास टेलीफोन होता है, ना फ़ोन होता है, ना इंटरनेट होती है, ना सोशल मीडिया होता है, ना अखबार होती है, ना मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ होती है, ना गाड़ी होती है, ना कपड़े होते हैं, ना मेकअप होता है, कुछ नहीं।
So we are all born naked, we are all born free, we are all born rich. And by rich, I mean rich with emotion. So if I ask you, how are you, आप लोग कैसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? What would you answer? I mean to ask you both your physical and your mental well-being. So I can see whether you are physically healthy or not, but I cannot see whether you are mentally healthy or not. Today, in this world, the number of deaths by suicidal attempts are increasing a lot. And this this is really alarming, you guys. I really don't think that people who commit suicide don't have guts, because it needs guts to take your own life. But it needs bravery to be alive and fight the journey, fight all the problems and continue the journey which you are having. अब खुद को एक चोट भी लग जाती है, एक स्क्रैच भी आ जाती है तो हम रोने लग जाते हैं. But contrary, people are taking their lives, their own lives, with their own hands. So there has to be some reason, some strong reason behind that thing. But no strong reason would justify doing such a thing, because you are just escaping the reality. Could be tons of reason why a person would want to take his or her own life. So now let's talk about some of such reasons. Firstly, let's talk about childhood trauma. So it can be experienced during the childhood phase, where a child can suffer from abuse, which can be physical, emotional, sexual, or negligence, which can be physical or emotional negligence. बिकॉज़ देयर आर मेनी पेरेंट्स जो कि बचपन में अपने बच्चों को बिल्कुल भी इमोशनली अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट नहीं होते, एंड दे डू देयर ओन थिंग्स, so that can cause the child to fail to process their own emotions and feelings, and hence suffer loneliness and self-doubt. Childhood trauma can also be experienced when he or she is mentally ill, or can be treated by their parents violently, or quarrel between parents. The surroundings also have a greater role to play, like social media comparison, the kind of friends that we make, having mental illness or psychological thinking, having addictive behavior or substance abuse, being an introvert, or experiencing loneliness. Like this little story of an high achiever, where we might have experienced or met such a person in our childhood days, where there was a topper of our class but struggling inside, in and out to get onto the expectations of others every time, and finding himself surrounded with anxiety. The little story of being socially isolated, where deep loneliness and isolation may be due to low self esteem, or being underconfident about one's appearance or background. The thing which matters is your personality. You can have a beautiful personality that would never fade away like your looks. So don't worry about the things that can't be changed. Be a better version. As far as the background is considered, there is really no such difference when you know your responsibilities and you can differentiate between the rights and the wrongs. किसी इंसान की परख उसकी डिग्री से नहीं, बट उसके बर्ताव से होती है, उसके व्यवहार से होती है. तो अगर व्यवहार अच्छा है और गलत और सही के बीच में फ़र्क करना जानता है, तो he is educated or else not. A teenager's struggle, where he or she is trying to adjust into his school and experiencing the peer pressure, self-identity crisis, anxiety, depression, comparison, and the fight for materialistic things is just so overwhelming. And in this stage, people find themselves or they lose themselves completely. So it's very important for us to keep a check onto our children or onto our siblings at that phase of their life. There is a stigma that men cannot express. Men have to be strong, men have to be less sensitive, less emotional, and
If they express or they try to do so, then they are weak. If they cry, then they are weak. In India, in 2022, there were more than 48,000 female deaths due to suicides, while the incidents were more than 122,000 for males. It's very important to celebrate the bonds that we have. Maintaining one's individuality is important too, but that shall not get obsessive. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें कोई हमारी खामियां गिनाए तो वो इंसान हमारे लिए गलत है। आपको गड्ढे में गिरने से रोकेंगे वही जो आपकी परवाह करते हो। And never stop believing in yourself. Never stop loving, never stop giving all that you have, receiving all that you can. ये बहुत ज़रूरी है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं हम उसमें अपना 100% दें और पूरी शिद्दत के साथ वो काम करें। और अगर वो काम हमें पसंद नहीं है फिर भी अगर हम अपना सब कुछ उस काम पे लगाए तो कह नहीं सकते कि लाइफ ने हमारे लिए आगे क्या सोच रखा हो। मे बी जो चीज़ हमें आज पसंद नहीं आ रही वही चीज़ हमें ऊंचाई के उस मुकाम तक लेके जाए और हम उस चीज़ से बहुत प्यार कर बैठे। लाइफ विल कीप ऑन टेस्टिंग आवर पेशेंस, सो डोंट गिव अप येट और गिव इन। So let's ask for the strength to overcome struggle and not for an easy life. After all, not all the sunsets are the ends. Some sunsets are the markings of new beginnings.